I'm Monal Lalit Karnawat, an alumni of Midas. I joined Midas in the year 18-19 batch at the age of 23, and I chose startup as I always wanted to do something of my own. And so I'm into right now candles and home fragrances. The brand name is Le Aromi. You can find us on Instagram, Le Aromi, @LeAromi, and www.learomi.com. Me and my friends had gone to a movie, and वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का भाई आया हुआ था. So he told me that I'm going to join this institute, मतलब Midas Institute, and it's all about entrepreneurship, business करना है, practically है, ये है, वो है, experiential learning है. So he told me that all of this is there. So I was like, okay, give me the brochure and a contact number of Midas Institute ka. I'll see what can be done. Then brochure padha, I told my dad, this is what it is. And since my schooling, I had told him that see, even if I do a job, मैं 2-3 साल experience के हिसाब से मैं करूँगी. अदरवाइज आई एम गोना स्टार्ट, मेरा खुद का कुछ तो करूँगी बट किसी के अंडर जॉब नहीं कर पाऊँगी. तो वैसा हुआ. एंड देन हियर आई केम, सॉ द कैंपस, सॉ द स्ट्रक्चर. माय डैड हैड आल्सो कम विथ मी, एंड देन वी फाइनलाइज कि ओके, आई हैव टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूट एंड लेट्स परस्यू व्हाट आई हैड टू डू आफ्टर 3-4 years. उससे अच्छा मैं अभी करूँगी. Abroad जाना would have been a very different experience, definitely. But Midas में जो experience रहा वो बहुत ही अलग था. It was as good as going to a different city, and because we used to live in this campus 24/7 with your friends, with the coaches, with everything. कभी 3 बजे भी पढ़ाई की है, कभी रात भर जगे हैं, कभी सिर्फ सोए हैं. It was everything was just in this whole vicinity. तो आई थिंक वो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स. आई थिंक जितना हॉरिजॉन जो ब्रॉड हुआ है मेरा यहाँ आके व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर, वो डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बुक था. So yeah, I think that learnings that I have learnt in this institute will definitely remain कई सालों तक मेरे साथ ही रहेगा वो. I still have my notes of my marketing, my accounting of Midas. I still have it in my shelf. So I keep looking कि अच्छा क्या है क्या नहीं ऐसा. So यहाँ पे actually we had these phases. अलग अलग phases थे हमको. जैसे other colleges and schools have these semesters, we had these phases. I think जितना practically आप सीखो ना उतना ज़्यादा आपको benefit करता है. And that's what Midas was focusing at that time. कि आप पहले खुद को मतलब बाहर क्या है क्या नहीं है, क्या problems लोग face करते हैं, all of that, वो सब जानो. Then आप उसमें से जो problems आप देख रहे हो उसमें से आप solution निकालो और उस solution में से आप एक business idea create करो. So वो एक फेज़ था. फिर एक ट्रांसेंड फेज़ था जहाँ पे आप खुद को जानते हो, तो उसमें फिर आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाता है. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, ऑल ऑफ दैट, एंड थ्रेट्स क्या हो सकती है आपको. तो वो था. एंड देन इन द होल प्रोसेस देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग, देयर इज क्रिएटिव थिंकिंग कि आप अलग क्या सोच सकते हो फॉर द सेम सोल्यूशन. And then your batchmates also help you
to brainstorm the ideas, and then we cut down on the ones which align with your traits, कि आप किस में बेस्ट हो सकते हो और आपके वीकनेस कैसे ओवरकम कर सकते हैं. So it was the whole amalgamation, not just professionally but personally too. And in the whole process, then you land up on few of the ideas where you think, okay, this sounds interesting and I will work upon this. आप हमेशा problem solving नहीं कर सकते हो, honestly, as an entrepreneur. There are multiple brands into the same industry. This came out of failure first, curiosity, and third being me being fanatic about or being passionate about fragrances. Failure जो मैंने शुरू किया था, I was actually into bath and body care when I passed from Midas. Then COVID आया, बहुत सारी चीज़ें हुई and बहुत सारी चीज़ें खुद के हिसाब से नहीं चली तभी. So I had to shut down that business. वो shut down करने के टाइम पे ही उसी ड्यूरेशन में I felt that pressure of what can I do next. So when I shut my previous business, I had like around 25k in my current account with no profit no loss thing. मैंने सब बेच दिया था. And with that 25k, I thought, okay, I'm coming out from something that I really loved, and now I cannot continue that. Curiosity, of course, I have to do something for myself. I cannot give up. And then I again, जो हमारा ना transcend यहाँ पे जो हुआ था मिडास में, I sat and did my SWOT analysis again. Then I went, इतना इंट्रोस्पेक्ट किया खुद के बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या अच्छा लगता है मुझे, या what is it that I really love. And then there was like creativity, something handmade, then fragrances, and I was like, okay. Since I had also done photography during my college times and I had that knowledge, I was like, okay, bang on, let's do this. तो वहाँ से फिर कैंडल्स की शुरुआत हुई. And candles something that वो not the regular ones that you see in a drugstore or anything. It's like something that feels very beautiful, very realistic, and adds a warmth, एक अपनापन, एक इमोशन वो कस्टमर को या जो भी वो यूज़ कर रहा है उसको वो इमोशन फील होना चाहिए. So that is how the decision of shutting my previous business and starting with this came up. I think failures आपके स्टेपिंग स्टोन्स हैं. हम सब सक्सेस को ही चेज करते हैं हमेशा. वी आर जस्ट कंडीशन टू डू दैट. तो फेलियर्स आर समथिंग दैट यू लर्न अ लॉट. जो मैंने पर्सनली मैं खुद भी फेल हुई ड्यूरिंग माई प्रीवियस बिजनेस, एंड देन आई रियलाइज कि मैं ये बिजनेस में क्या नहीं करना है. सो यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स अ लॉट, एंड आई थिंक as an entrepreneur you should always fail. That's where you learn and come up with something new. I think my family have always supported with all of my decisions that I've made for career, honestly. My dad is a tax consultant, a self-made man who has seen a lot of struggles. And he had always stated one line कि मैं खुद के लिए काम करूँगा. And somehow it has मेरे में भी वही आया है. Yes, कि खुद के लिए करो जो करना है. Probably you can, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, but work for your own self first. So he's a tax consultant. He wanted to pursue CA. He was. But फिर उनकी शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, all of that. But today he has CAs under him. So I'm glad that looking up to a man who has been through so much and then starting your own journey, I think that is what has
inculcated in me also. And मैंने जब बोला था कि मुझे खुद का ही करना है, he was like okay. He never asked me कि क्यों ऐसा, there are 10 other things or this that. He was like okay, no problem. He always guided me. Even today, since he is a tax consultant, मेरे accounts सब वही देखते हैं. All my numbers come from him. Somebody who's into, अभी तो ठीक है, you know there's Shark Tank है, ये है, everybody is like entrepreneurship. यार हम लोग तो तब से entrepreneurship के लिए भाग रहे हैं, even before Shark Tank. तो I think Midas made me realize lot of my capabilities and capacity कि मैं क्या कर सकती हूँ. I never thought that I could have a good eye or good mindset to write creatively. I mean मैंने पोएम लिखना यहाँ पे सीखा. मतलब because we had creative writing, then my brain started thinking कि अरे लिख सकते हैं. लिखना पड़ेगा वो बात अलग थी, but लिख सकते हैं. If you really have that याद तो नहीं है मेरे को, but I think I might have a screenshot. I can check. So the title says believe in yourself. I am a belief that supports you and mentally, so believe in yourself. I am a belief that motivates you every day, so believe in yourself. I am a belief that shapes your thoughts and reality, so believe in yourself. I am a belief that nurtures your dream, so believe in yourself. I am a belief that makes you strong for every storm that comes your way, so believe in yourself. No matter how hard it gets or what others say, just believe in yourself, because nobody knows better than you. So this was one of the things that I had written during our creative writing. I think as women we are by blood, by birth, जो बोलना है बोलो, we know management. Be it business, be it house, be it personal life, be it kids, be it anything, honestly. We know management. तो अगर कोई भी women जिनको चालू करना है उनका business, they should. भले small scale, it's not necessary you have to create a big multi-billionaire brand from the first day. No, not needed. You don't need ज़्यादा investment. It's just you and your service and what you are really passionate about. I feel as a woman they should do. भले ही छोटा मोटा वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी boom होगा, but होगा ज़रूर. And for that matter, even government is supporting now. The budget itself has given lot of schemes, this year's budget. So yes, definitely a woman should fly. And we should get starting up. You should get your wings working, I feel. But yeah, I mean, there were times that we actually used to sit and really think and write, and there were times कि हमने सोचा ही नहीं, बस ठीक है डाल दिया कुछ, तो ऐसे भी था. But हाँ, आप incubation, अब जैसे हम लोग industry visits जब करते थे during our first phase, that time we used to write a lot of things. Okay, we met this owner, that was his mindset, हमने ये देखा आज उनके. So one of the times it was like automobile section industry में हम लोग जब visit कर रहे थे, we had gone to Mercedes-Benz showroom. तो वहाँ पे क्या किया, how did the owner or the manager जो भी है talked, what was his learnings through the journey, and all of that we used to write down. Basically एक दूसरों के experience से सीख के आप
लिखूं. So उस टाइम पे so we have to create like a presentation about your business idea. आपने जो चूज़ किया है उसका MVP, उसका मार्केट स्ट्रक्चर की ग्रोथ रेट क्या होगा, ये बेसिकली इन ब्रीफ यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट द स्कोप इज़ इन फ्यूचर विथ सम लॉजिकल नंबर्स ऑफ कोर्स कि एस्टिमेटेड मतलब तुम्हारा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, ऑल ऑफ दैट थिंग वो सब था. एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास एज वेल एज योर पेरेंट्स एंड अदर पेरेंट्स टू. तो ऑफ कोर्स वी मतलब आई रिमेंबर आई वॉज द लास्ट वन टू प्रेजेंट इन द होल. सबका होने के बाद मेरा लास्ट था. एंड बाय द टाइम इतने प्रेजेंटेशंस देखने के बाद सब एंड तब आई थी उरी मूवी एंड दैट डायलॉग ऑफ हाउस द जोश. माई प्रेजेंटेशन स्टार्टेड विद दैट टू गिव दैट jerk to everybody. Okay, now I'm here to present, so please look. So all of these things also matters a lot as an entrepreneur when your presence of your mind कि सब अभी drain हो चुके हैं, you have to make them lift their energies and moods etc. So by the end of the presentation everybody was in tears because again, since I told you, I started writing poem. I wrote a poem for my parents as well in Hindi. So I wrote that and eventually all of them had tears because the whole poem was all about एक बेटी, एक पिता और एक mom, like how they support and उनके wings आपको कैसे आप support करते हो as parents and how they did it to me. It was all about that. तो वो एक emotional moment भी था. एट द सेम टाइम एक रियलिटी चेक भी था कि यू नो आप एक जर्नी, आपने 6 महीने की जर्नी, आप एक आइडिया पे काम कर रहे हो एंड आपको वो प्रेजेंट करना है. तो या आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट फेल्ट मोमेंट बिकॉज आप नंबर्स भी दे रहे हो उसी प्रेजेंटेशन में, आप आपका प्रोडक्ट भी बोल रहे हो और आप एक इमोशनल कनेक्ट भी बना रहे हो एट द सेम टाइम. Why I chose poem was because एक है ना रिलेटेबल हो जाता है वो एक रिदम में जब आप बोलते हो कोई चीज़. सो यू ट्राई एंड फोकस ऑन दैट रिदम मेक्स यू मोर फोकस्ड. एंड सिंस आई वॉज द लास्ट वन टू प्रेजेंट एवरीबडी वॉज ड्रेन्ड आउट. आई मीन आप कितना दिन में कितने प्रेजेंटेशंस देखोगे ना, तो वो to give that emotional connect, I think poem suited the best. I felt that time. I could have also given something else maybe, but poem was something that came from my heart also at that time for my parents. क्योंकि वो एक moment था कि I could just be grateful to what I've got from them. My mom did cry. Parag sir had tears in his eyes. A lot of fathers sitting there had that emotional moment within their hearts. Of course, they don't show it. वो नहीं दिखाते हैं सारे पापा जो भी थे वहाँ पे बैठे हुए. But yeah, मतलब एक emotional silence था उस. You know, everybody was like, in that moment, everybody was silent and ये क्या था like? It was a very nice, heartfelt moment where कि सब इतने कनेक्टेड है एक ही थॉट से. सो इसीलिए जब आई मीन दैट इज़ वाई क्रिएटिव राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो कि आप अब जब आप खुद जब लिखते हो तब आपको समझ में आता है कि आपको क्या कन्वे करना है, फिर वो कस्टमर हो या आपके इन्वेस्टर हो या जो भी हो.
One is definitely thinking 360, एक 360 thoughtful process होना चाहिए आपका, कि आप एक चीज़ पे अगर काम कर रहे हो तो उसकी 360 प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं या 1000 प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं उस एक चीज़ को लेके, और आप वो कैसे सॉल्व कर सकते हो. आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉज वन थिंग दैट आई कुड रियली लर्न फ्रॉम योर. तो टुमारो मतलब अगर मुझे कभी ऑपरेशंस में मेरे प्रॉब्लम्स आ जाती है, आई थिंक थ्रू कि वाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग और मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट्स इन माई कंट्रोल. सेकेंड इज I think team building. I mean now I'm training people. अभी इसी साल से शुरू किया है. But team is very important. And third is going to be, आप जो दोस्त यहाँ पे बनाते हो वो it's for lifetime. I mean I have my friends. We are still connected and we still meet. This place gives you that. Personally. Fourth is your own understanding about your own self. मतलब आप probably you are not capable right now but you will have that capability to do. क्योंकि आप जब घुस जाओगे तब आपको समझेगा कि ये करना है. तो knowing yourself is a very big learning. So as an entrepreneur, I keep talking to myself also. कि क्या? Fifth is going to be, I think networking. Definitely. Very important. I think fifth is the most important one. Other four are also, but fifth is networking. I mean, आप जितना network करोगे, लोगों को मिलोगे, आप उतना सीखोगे.